Hello IELTS seekers, welcome back to Navneet's English Planet. In our today's video, we are going to focus on IELTS reading and the question type is multiple choice questions. And let me tell you that this video is on the request of a subscriber, and if you too want me to make a video on some particular topic related to IELTS, you can also mention in the comment box. And also let me take the opportunity to extend my special thanks to that subscriber who has appreciated my work. It is with your motivation that I am continuing with my videos. We are going to take up passage 3, making the most of trends, from test 2 of Cambridge 13. Let's quickly begin with it. So this is our Cambridge English IELTS 13 academic, and the passage that we are going to take up is making the most of trends. Book de upar mark nahi karange apan. We will use these papers. First of all, we will read the questions. First question is, in the first paragraph, the writer says that most managers. फर्स्ट पैराग्राफ हुण साडे कोल एक तां लोकेशन लिमिट होगी, सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ चो रीड करना आपां. द राइटर सेज दैट मोस्ट मैनेजर्स, ज्यादातर मैनेजर्स. हुण आपां ऑप्शंस पहला रीड नहीं करांगे. इफ वी रीड द ऑप्शंस फर्स्ट तां आपां नूं बहुत कन्फ्यूजन हुंदी है. आपां जिथे मोस्ट मैनेजर्स है उहनूं रीड करना स्टार्ट करांगे. मोस्ट मैनेजर्स कैन आइडेंटिफाई द मेजर ट्रेंड्स ऑफ द डे. ज्यादातर मैनेजर्स जो उस टाइम प्रेजेंट ट्रेंड चल रहे ने उन्होंने आइडेंटिफाई कर सकते ने. बट हुण बट कह के ऑपोजिट किया होया, कॉन्ट्राडिक्ट किया होया. In the course of conducting research in the number of industries and working directly with companies, इस research दे विच companies नाल work करके we have discovered, researchers कह रहे ने कि असी ये discover किया, मैनेजर्स ऑफन फेल टू रिकॉग्नाइज. हुण आपां मेनली अपना रेफरेंस ये है कि मैनेजर्स रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते द लेस ऑब्वियस बट प्रोफाउंड वेज. जो लेस ऑब्वियस ने, जो ज्यादा क्लैरिटी नहीं है जिन्हां विच, पर प्रोफाउंड वेज ने, मीन्स जो इंपॉर्टेंट है उन्होंने फाइंड नहीं कर पाते. These trends are influencing consumers' aspirations, attitudes and behavior. कि किमें ट्रेंड ने जो वो कंज्यूमर्स दियां एस्पिरेशंस, एटीट्यूड ते बिहेवियर नू इन्फ्लुएंस कर रहे ने. दिस इज स्पेशली ट्रू ऑफ ट्रेंड्स दैट मैनेजर्स व्यू एज पेरीफेरल, मीन्स उन्हां नू ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मानते टू देयर कोर मार्केट. हुण आपां ऑप्शंस रीड करांगे. फेल टू स्पॉट द की कंज्यूमर ट्रेंड्स एट द मोमेंट. उस टाइम की ट्रेंड चल रहा उन्होंने स्पॉट नहीं कर पाते. बट ए फर्स्ट लाइन विच है कैन आइडेंटिफाई द मेजर ट्रेंड्स ऑफ द डे. तो ये अपना कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, फॉल्स हो गया, इन्हों आप कंसिडर नहीं करांगे. नेक्स्ट इज मेक द मिस्टेक ऑफ फोकसिंग ओनली ऑन द प्रिंसिपल कंज्यूमर ट्रेंड्स. जो प्रिंसिपल कंज्यूमर ट्रेंड्स ने ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ. बट इत्थे आपां नूं ਇਹ चीज नहीं ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ कि ਕਿਹੜੇ ट्रेंड्स ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, प्रिंसिपल ने या कुछ भी, मीनस ਉਹਦੇ ਨਾਲ रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन ਸਾਨੂੰ नहीं मिली. नो डाउट उन्होंने क्या होया कि पेरीफेरल ਦੇ ਉੱਪਰ ज्यादा फोकस कर लेंदे ने, बट ਉਹਦਾ ਇੱਕ पार्ट है. दिस इज स्पेशली ट्रू ऑफ, टोटली ਉਹਦੇ रिगार्डिंग नहीं है. नेक्स्ट, मिस इंटरप्रेट मार्केट रिसर्च रिलेटिंग टू करंट कंज्यूमर ट्रेंड्स. जो उस टाइम करंट कंज्यूमर ट्रेंड्स ने, जो चल रहे ने ट्रेंड, उन्होंने मिस इंटरप्रेट करते ने. बट सानू उन्होंने कहा कि आइडेंटिफाई कर लेंदे ने, तो ये भी कॉन्ट्राडिक्ट हो गया. नेक्स्ट है आर अनअवेयर ऑफ द सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट दैट ट्रेंड्स हैव ऑन कंज्यूमर्स लाइव्स. वो अनअवेयर हुंदे आ, वो क्लीयर नहीं हुंदे कि किस तरह जो इंपैक्ट पै रहा है ट्रेंड्स दा कंज्यूमर्स दी लाइफ दे ऊपर. हुण ये चीज असी रीड कीती है, आर अनअवेयर ऑफ. आपां इत्थे कीता फेल टू रिकॉग्नाइज, इहदे लई उधर वर्ड यूज होया होया अनअवेयर. अनअवेयर हुंदे आ
profound ways ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। these trends are influencing consumers aspirations ਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਲਈ ਵਰਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ significant impact trends ਦਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਸ ਐਟੀਟਿਊਡ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕੰਸੀਡਰ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ D is our right option। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਹੈ, ਦੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਊਟ ਹੈ ਸਪੋਜ਼, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੀਵਰਡਸ ਪਿਕ ਕਰਕੇ ਉਧਰੋਂ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵਰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਧਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਨਅਵੇਅਰ ਲਈ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅਨਅਵੇਅਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਡ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਫੇਲ ਟੂ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼। significant impacts are impacts influence trends आया ही हुआ, trends आ गया अपने को। then consumers lives इधर है consumers aspirations attitudes and behavior। so our right option is D। next is according to third paragraph। ਹੁਣ limit होगी information third paragraph चो ही find करना आपा। coach was anxious to, कोच इज द नेम ऑफ द कंपनी। वो कंपनी की करन लई एंशियस सी। पहला आप पूरा दा पूरा पैराग्राफ रीड करांगे। कोच द रेफरेंस है थर्ड पैराग्राफ विच। इन केस इन पॉइंट ऑफ पॉपी रेंज ऑफ हैंडबैग्स विच द फर्म कोच क्रिएटेड in response to the economic downturn of 2008, the Coach brand had been the symbol of opulence and luxury। opulence the luxury the means class the symbol है Coach brand है जो for nearly 70 years। and the most obvious reaction to the downturn would have been to lower the prices। ਸਭ ਤੋਂ ਮਤਲਬ obvious impact ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਾਊਨਟਰਨ ਜਿਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਲੋਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। however ਨਾਲ contradict ਹੋ ਗਿਆ। that would have risked cheapening the brand's image, but ਇਹਦੇ ਨਾਲ brand ਦੀ image down ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। instead they initiated a consumer research project which revealed that consumers were eager to lift themselves and country out of tough times। using these insights ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਸਾਈਟਸ ਮਿਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੋਚ ਲਾਂਚ ਦਾ ਲੋਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪੌਪੀ ਬੈਗਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੋਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਪੌਪੀ ਬੈਗਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ which were in vibrant colors, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ vibrant fluorescent colors ਵਿੱਚ ਸੀ, and looked more youthful and playful than conventional Coach products। ਆਪਣੇ normal products ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ different launch ਕੀਤਾ। creating the sub brand allowed Coach to avert an across the board price cut। ਇੱਕ ਨਵਾਂ brand means ਇੱਕ sub brand launch ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ price cut जो पूरी दी पूरी रेंज का प्राइस कट करना पैना सी उन्होंने एवर्ट करता है। एवर्ट मीन्स अवॉइड। ता बहुत कंपनीज दे ऑपोजिट उन्होंने प्राइस कट नहीं कीते। कोच सॉ द न्यू कंज्यूमर, उन्होंने नवे कंज्यूमर माइंडसेट नू अंडरस्टैंड करके इनोवेटिव आइडियाज लेके आंदे। नाउ वी विल रीड द ऑप्शंस। follow what most of its competitors were doing। उन्होंने भी वही किया जो उन्होंने कंपैटिटर कर रहे सी, बट नो उन्होंने उधर आप लिखा होया पढ़िया कि उन्होंने जो कंपैटिटर्स कर रहे सी लोअरिंग द प्राइजेस, बट इन्होंने नहीं किया। मेंटेन इट्स प्राइस थ्रू आउट इट्स रेंज, कि अपनी ओही प्राइस कंटिन्यू रखे, ये भी नहीं है क्योंकि आप ये किया कि उन्होंने लोअर प्राइस के बैग अरेंज किए। सो दिस वाज आल्सो रॉन्ग। safeguard its reputation as a manufacturer of luxury goods। luxury good बनाने वाली अपनी जो reputation सी उन्हों कायम रखिया। of course yes। modify the entire look, अपने पूरे brand दी image look change करती नहीं, उन्होंने सिर्फ एक सब brand दी कीती सी, पूरे brand दी नहीं कीती। so this was also wrong। उन्होंने अपनी reputation ਨੂੰ maintain रखिया, उन्होंने price cut नहीं कीता, avert कीता। लाइक अपने को ये वर्ड आया सी अवर्ट एंड अक्रॉस द बोर्ड प्राइस कट, तो उन्होंने अपनी रेपुटेशन मेंटेन रखी। सो दिस वाज राइट। व्हाट पॉइंट इज मेड अबाउट टेस्कोज ग्रीनर लिविंग प्रोग्राम। टेस्को दे ग्रीनर लिविंग प्रोग्राम बारे केड़ा पॉइंट दिता हुआ है। वी विल गो टू टेस्कोज ग्रीनर प्रोग्राम।
A further example of this strategy was supermarket Tesco's response to consumers' growing concern about the environment. With that in mind, Tesco, we will read it from here, which demonstrates a company's commitment to protecting the environment. Environment nu protect karan da ਉਹਨੇ like initiative लिया, consumers ਨੂੰ involve ਕੀਤਾ, जिन्हें tangible results, visible results produce ਕੀਤੇ. For example, Tesco customers can accumulate points. ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, concern ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ environment ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ use ਕੀਤਾ. Like points earned on regular purchases, these green points can be redeemed for cash. So we will read the options now. It did not require Tesco to modify its core business activities. ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਆਪਣੀ business activities ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ change ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ. Yes, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਹੋਰ changes ਕੀਤੇ, ਆਪਣੀ strategies ਵਿੱਚ change ਕੀਤਾ, but main business activities ਵਿੱਚ ਕੋਈ change ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ. ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਵੀ ਆਪਾਂ option means we can think ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ. It succeeded in attracting a more eco-conscious clientele. Means ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਉਹ clients attract ਹੋਏ ਜੋ environment conscious ਸੀ, but ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੋਈ reference ਨਹੀਂ ਆਇਆ. Its main aim was to raise consumers' awareness. ਉਹਨੇ strategy use ਕੀਤੀ ਸੀ, but ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ main aim ਹੀ consumers ਦੀ awareness raise ਕਰਨਾ ਸੀ. So this was wrong. It was not the first time that Tesco had implemented such an initiative. ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੋਈ reference ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨੇ first time ਕੀਤਾ ਜਾਂ last time ਕੀਤਾ. So the option which we are having is, it did not require Tesco to modify its core business activities. ਇਹਦੇ ਲਈ wording ਦੇਖੋ. Tesco had not abandoned means had not given up. ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ. Its traditional retail offerings, अपनी traditional retail offerings मतलब जो core business activities थी, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨੇ modify नहीं ਕੀਤਾ, change नहीं ਕੀਤਾ, abandon नहीं ਕੀਤਾ, ਛੱਡਿਆ नहीं. So A was the right answer. Next is, what does the writer suggest about Nike's strategy? Nike ਦੀ strategy ਬਾਰੇ writer ਨੇ ਕੀ suggest ਕੀਤਾ? And first of all, we will find where Nike is written. See, it is here. But consider Nike's move to integrate the digital revolution into its reputation for high performance athletic footwear. Nike ने जो move किया, उन्हें consider करो. 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ they teamed up with the technology company. Teamed up मतलब ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ. ਐਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ. ਨਾਈਕੀ ਪਲੱਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ. A digital sports kit comprising a sensor that attaches to a running shoe and a wireless receiver that connects to the user's iPod. ਤਾਂ ਉਹ user ਦੇ iPod ਦੇ ਨਾਲ connect ਹੁੰਦਾ ਸੀ. By combining Nike's original value proposition for amateur athletes, ਉਹਨੇ combine ਕੀਤਾ Nike ਦੀ original value ਨੂੰ with one digital consumer. ਇੱਕ digital consumer ਦੇ ਨਾਲ match ਕੀਤਾ. The Nike plus sports kit and web interface moved the company from a focus on athlete apparel to a new plane of engagement with its customers. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ strategy ਅਪਣਾਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ reputation ਵੀ maintain ਕੀਤੀ, plus engagement ਵਧਾਈ customers ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ strategy ਦੇ ਨਾਲ. Okay, then it was an extremely risky strategy at the time. Risky strategies ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ. It was a strategy that only a major company could afford to follow. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀ ਮਨੀ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ. ਤਾਂ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ. ਜੋ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੋਈ, not given ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ. It was the type of strategy that would not have been possible in the past. Past ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ. ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, past ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ. So wrong. It was the kind of strategy that might appear to have few obvious benefits.
ਇਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਸੀ ਜਿੱਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏ। ਸੋ ਡੀ ਵਾਜ਼ ਦ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਕਿ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੋਣਗੇ, ਬਟ it gave him the engagement with its customers. Now the next one. What was original about Me Too? Me Too ਦੇ ਬਾਰੇ original ਕੀ ਸੀ? We will find the reference of Me Too first. See, it is here. A product that accomplished this is the Me Too, a video game created by Canada's iToys by reaffirming a toys categories association with physical play. Association with physical play. उन्होंने physical play ਨੂੰ involve ਕੀਤਾ. It counteracted some of the widely perceived negative impacts. बाकी जो games ਵਿੱਚ negative impact ਸੀ ਉਹਨੂੰ counteract ਕੀਤਾ. And interactive games, a full color LCD. What set it apart was that ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਸੀ, that it incorporated the traditional physical component of children's play. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਬੱਚੇ ਜੋ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲੀ ਜਿਵੇਂ ਖੇਲਦੇ ਸੀ, physical activities, that was involved. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਡੋਮੀਟਰ ਸੀ which tracked and awarded points for physical activity, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ points ਦਿੰਦੀ ਸੀ physical activity ਲਈ. The child could use the points to enhance various virtual skills. और video game ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ points ਮਿਲਦੇ ਸੀ, additional points. Let's read it. It contained technology that had been developed for the sports industry. ਹੁਣ sports ਨਾਲ related ਥੋੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ physical activity ਵਿੱਚ involve ਕੀਤਾ ਗਿਆ, but sports industry is a bigger platform. ਉਹਦਾ ਕੋਈ reference ਨਹੀਂ ਆਇਆ. It appealed to the young people. ਨਹੀਂ, young people ਦਾ reference ਨਹੀਂ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਕਿਹਦਾ reference ਆ ਰਿਹਾ? children ਦਾ. So ਇੱਕ word ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ wrong ਹੈ. It took advantage of a current trend for video games with colorful 3D graphics. But ਸਾਡਾ main ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ negative impact ਜੋ ਸੀ physical play ਨੇ involve ਕੀਤਾ, negative impact ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ, physical play involve ਕੀਤੀ. So ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ. This is not true. ਇੱਕ handheld game ਸੀ that addresses people's concerns about unhealthy lifestyles. ਲੋਕਾਂ ਦੇ unhealthy styles ਲਈ ਜੋ concern ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨੇ counteract ਕੀਤਾ. Counteract some of the widely perceived negative impacts of digital gaming devices. So our right option was D. I hope this video is going to assist you in clearing your doubts about the MCQs, and in future to keep visiting for more such content. Thanks for watching.